बहुत समय ऐसा होता है स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि कोई कमर्शियल मैटर्स क्रिमिनल मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा केस है। केस तो अच्छा नहीं है पर बहुत अच्छा जजमेंट है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तीन एस्पेक्ट्स के लेके बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। सो यू हैव कमर्शियल डिस्प्यूट नाउ। एक एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं, सोचिए कोई एक दो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस चल रहा था, ऑल ऑफ ए सडन एक पर्टिकुलर पेमेंट है जो वो नहीं दे पा रहा है। नाउ उस पैसे को रिकवर करने का जो तरीका होता है नॉर्मली वो सिविल में होता है। मनी सूट फाइल होता है और फिर वो मनी बैंक उसको सॉरी कोर्ट से उसको रिकवरी के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स है द कोर्ट विल प्रोसीड ऑन दैट। नाउ बहुत सारे केसेस में ये होता है कि लोग सिविल में नहीं जाके क्रिमिनल में चले जाते हैं एंड दे विल फाइल केसेस अंडर सर्टेन सेक्शंस इन पुलिस स्टेशन। नाउ ये वाला जो केस है एग्जैक्टली सही है। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोपोजिशन है जहाँ पे वो कह रहा है कि इन सम केसेस अ कमर्शियल डिस्प्यूट मे गिव राइज टू अ क्रिमिनल ऑफेंस। So, just because the offense is criminal in nature, there are two things that can happen. One, this might cause civil action in before a civil forum, or it might bring some penal consequences, some punishments. Now, how would you decide whether this dispute would go under civil action or under criminal action? Now, this is a 420-415 matter जो कि चीटिंग के अंतर्गत है। Now, court gives a very good illustration how to differentiate or how to find a line between civil action and penal action. Now, it says here, did the offending party make dishonest representation at the inception of the transaction and induce the other party to part with property or act in a manner which, but for such representation, the latter would not have done? What it means is this: at the very beginning, जब दो बिजनेस institutions agree करते हैं that okay we will do the business, okay, so somebody will give something and the other will give something in return. So whoever is the first party who is giving the first set of, let's say, delivering the properties, believing that because there is always a give and take, so he is giving something, you will get back something. Now in that situation it says at the inception, जो रिप्रेजेंटेशन के वजह से वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ था, जैसे उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप ये काम कर दो, मेरा पास देखो ये बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है, या फिर मेरे पास ये है, मेरे पास वो प्रॉपर्टी है, हम दे देंगे, जो भी है कुछ रिप्रेजेंटेशन तो ज़रूर रखा होगा ना, जिसके वजह से पार्ट विद द प्रॉपर्टी, जिसके वजह से वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होता है। अगर वो जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर वो रिप्रेजेंटेशन गलत था, अगर क्योंकि अगर वो रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तो वो ट्रांजैक्शन भी नहीं होता। दिस इज वेयर द cheating, the 420 elements come in cases of commercial dispute. अगर वो रिप्रेजेंटेशन अगर कुछ दूसरा तरह का होता, then probably the transaction would not have happened, है ना। अगर उन्होंने नहीं कहा होता कि देखिए मेरा तो ये घर है, मैं घर बेच के आपको पैसा दे दूंगा, बट में पता चला कि घर उसका है ही नहीं, तो वो कैसे देगा, है ना। तो इस तरह के जो सिचुएशन है, इन दैट केस द कोर्ट सेज दैट इफ दैट इंटेंट टू डिसीव शुरुआत से ही है, then only it will attract penal consequences, otherwise it will go under civil action.
एक केस स्टडी भी है शायद यहाँ पे, लेट मी जस्ट सी, जस्ट अ सेकंड. Yes, Khoda Bhaksh versus Bakia Mandari. In this particular case, it says the accused had deceived the complainant to part with money on the assurance to liquidate a mortgage debt and utilize the money to repay another debt which he had suppressed. No such divergence of funds or goods is made out in the factual metrics to show deception by the appellant. ये जो केस है एक्चुअली इस केस का भी एक अपना हिस्ट्री है, बट देन द बॉटम लाइन में इस केस में क्या हुआ था, जो अक्यूज था या फिर जो डिसीवर था, उसने जो पैसा लिया था, उसने ये नहीं बताया था कि वो पैसा वो ले रहा है किसी दूसरे के उधार जो लिया हुआ है उसने उसको रिपे करने के लिए. उसने जो रीजन दिखाया था वो रीजन कुछ अलग था. बोला होगा कि मुझे कुछ काम है, मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, जो भी वॉट एवर दैट इज इन नेचर. नाउ द रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग. So hence if the representation is wrong, then only it will attract penal consequences. So anytime you have a situation where you need to bifurcate between civil action and penal action, you always have to do this test of intentionality or the representation, the initial representation. If the initial intention and the representation was wrong or incorrect factually, then only penal consequences can be attracted. Thank you.